Hello dear students, welcome back to our YouTube channel CHSE Science Classes. तो आज जो फिजिक्स लेक्चर में डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट टॉपिक्स दैट इज Huygen's वेव थ्योरी एंड प्रिंसिपल. ओके सो आम डिस्कसन करते अबाउट ऑप्टिक्स रो सेकंड सेक्शन दैट इज वेव ऑप्टिक्स. तो वेव ऑप्टिक्स रो मेन फाउंडेशन इज बेस्ड अपॉन दिस Huygen's वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड तार कौन प्रिंसिपल होची से विषय में डिस्कसन करबा. नेक्स्ट आम डिस्कसन करबा अबाउट दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव. सो दिस इज ए माने फर्स्ट ईयर आप मैंने ऑलरेडी पढ़ी लगुच माने गोटे वेव को आम केमती रिप्रेजेंट करा साइन वेव और साइन वेव रो रिप्रेजेंटेशन केमती करा जाए सो ऑलरेडी विषय आप पढ़ी भावुची. देन इंटरफेरेंस एक्चुअली कौन इंटरफेरेंस एंड तार बेसिक कौन से विषय में डिस्कसन करवा. एंड नेक्स्ट आम जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो आम सिंपल वाटर वेव एनालॉजी माध्यम आम एक्सप्लेन माने बुझा चेष्टा करवा. ओके सो लेट्स स्टार्ट करवा आज लेक्चर. And before starting the lecture, I request that to please subscribe our channel को CHSE Science Classes जोटी आम कंटेंट दूचु फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स को मानक पाई CHSE बोर्ड मीडियम स्टूडेंट्स मानक पाई. एंड जॉइन आवर फेसबुक पेज सेम नेम CHSE Science Classes. सो आम जब किसी नुआ वीडियो अपलोड करचु और समथिंग देन तार लिंक गुड़ा और किसी में नुआ मटेरियल जो अपलोड करचु तो तार लिंक गुड़ा आम चैनल रे आम जो फेसबुक पेज रे आम पोस्ट करचु. ओके सो यहाँ आम लास्ट क्लास ऑलरेडी आम डिस्कसन करते सो आप देखते बोली भावुची माने गोटे वेव रो डिफरेंट पैरामीटर्स विषय आम एक्सप्लेन करते लाइक वो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कौन एंड से भीतर रिलेसन कौन माने दिस फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस एंड जोटा कि लैम्बडा होची हमर कौन वेव लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव वी आर टॉकिंग अबाउट. तो एगुड़ा विषय आम लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कसन करते एंड आज हम स्टार्ट करबा अबाउट Huygen's थ्योरी. सो ये कौन कहूँ सो यहाँ विषय में भी ऑलरेडी डिस्कसन करते लाइट इज ए मेकानिकल वेव मूव्स इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम दैट इज ईथर मीडियम. सो ईथर मीडियम कौन एक्चुअली आम लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कसन करते दैट इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट जार एक्जिस्टेंस आम ए जाए जानीपारे ना प्रूव हो पारा ना. ओके सो ये गोटे सोर्सटे नहीं सपोज एस. सो एस को रिप्रेजेंट कर दैट इज ए सोर्स and source man actually which possesses its own light and light will emit from the source mane light ta emit karibo source ru. So this is our primary source mane जोठू आम एक्चुअली सपोज आम गोटे एग्जांपल हम सन है और सपोज रूम रे आम गोटे ट्यूब लाइट जब आम लगुच सो दैट कैन बी ए प्राइमरी सोर्स. ओके नेक्स्ट सो लाइट टा कौन हम सपोज माने इन ऑल द डायरेक्शन इट इमिटिंग लाइट माने सब डायरेक्शन में लाइट टा इमिट करूची. ओके and suppose so that sphere that will be in the form of a sphere because what suppose am point source tenel what point रे so light टा कोन मान सब डायरेक्शन लाइट टा ग्लो करिवो राइट. जदि ग्लो कला देन हमर जो ये डो आसला जो सरफेस टा आसला that will be in the form of a sphere. so it किंतु टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट इज लुकिंग लाइक ए सर्किल गोटे सर्किल गोटे देखा जाउची बट इन रियल इट विल बी लाइक ए स्फीयर ओनली. ओके एंड सपोज ये गोटे पार्टिकुलर गोटे सिग्मा को माने गोटे सरफेस टे मु डिफाइन कली. सो दिस सरफेस इज आवर सिग्मा एंड सिग्मा इज सरफेस एनक्लोजिंग द सोर्स एस. एंड सपोज ए पॉइंट रे मु एक्चुअली लाइट रो सपोज इंटेंसिटी और समथिंग आई वांट टू मेजर एट ए पॉइंट ए. ओके हेले कोन करिया पड़िबो इफ ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस हैज टू रीच ए पॉइंट बियॉन्ड सिग्मा इट मस्ट क्रॉस द सरफेस. तो जदि ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस बिकॉज हमको जो लाइट इज ए मैकेनिकल वेव तो ये जो मोर मैकेनिकल वेव जो बाहरला सो से जदि ए पॉइंट रे पहुँचा चाहूँगी सी तो ऑब्वियसली से सिग्मा सरफेस क्रॉस करके जावा पड़ो राइट. या सो पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑन सिग्मा विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ओके सो जेहेतु गोटे मैकेनिकल वेव बोली हम कहूँ लाइट वेव को सो ये जदि आमर आसला तो ये सिग्मा सरफेस रे जो पार्टिकुलर रहिबो से पार्टिकुलर पार्टिकल्स गुड़ा भी कौन करिवो से वाइब्रेशन स्टार्ट करिवो. देन कौन हम this particles on the second surface or that is the sigma surface so they will act like a secondary source. so eta मोर रहला कोन प्राइमरी सोर्स ए पॉइंट रे मते मेजरमेंट करबार छै ऑप्टिकल डिस्टेंस केते रीच होची ए पॉइंट रे. सो जदि हमरो ऑप्टिकल डिस्टेंस टा ए पॉइंट रे पहुंचबा को पड़ियो देन इट हैज टू पास दिस सेकेंडरी सरफेस दैट इज सिग्मा सरफेस. तो सिग्मा सरफेस को पास कला बेलको सी कोन करबो एठी जो पार्टिकल गुडा अछि तो से कौन करो तार ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस गुड़ा ट्रांसफर करो. देन द पार्टिकल विल बी ऑन दिस सरफेस सिग्मा सो दे विल एक्ट लाइक ए सेकेंडरी सोर्स. ओके
so that is so particle on this sigma will elect now the new source of light waves emitting spherical waves and disturbance at point A, which is called by the superposition of all the spherical waves coming from different point on the sigma. माने जो sigma point रे जो different points गुड़ा रहिला तो ये कौन करिवो न्यू सोर्स ऑफ लाइट गुड़ा बिहेव करिवो एंड सेठी कौन हम जो स्पेरिकल वेव गुड़ा एठो जो स्पेरिकल वेव माने सपोज ये पॉइंट आसला तो ये पॉइंट रो भी कौन हम स्पेरिकल वेव गुड़ा सब फॉर्मेशन हो तो से स्पेरिकल वेव रो सुपरपोजिशन जोगु हमर कौन हम से ए जो फॉर्मेशन हो ए पॉइंट रे आमे जो डिस्टेंस मेजरमेंट करवा that will be the superposition of all the spherical wave that is emitting from different points on the sigma माने sigma point रे हमर बहुत गुडा पॉइंट आसीबो तो सेही पॉइंट रो सुपरपोजिशन जोगु हमर spherical wave रो जो फॉर्मेशन हो so that will be the disturbance that is reaching at the point A. Okay, yeah, तो ताको हमें डिफाइन करबा कोन so various points on an arbitrary surface when reached by a wave front become secondary source of light माने जो सिग्मा सरफेस डिफरेंट पॉइंट आसला which emit secondary wavelets. The disturbance beyond the surface results from the superposition of the secondary wavelets जोटा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करली ताको हमें रिसाइड करले that is called the Huygen's principle. Okay, so let me give you an example. So सेटा हमर रहला कोन सोर्स टा. ओके, तो सोर्स टा कोन हमर स्फेरिकल वेव फॉर्मेशन करछि माने तार डिस्टर्बेंस टा पूरा ऑल द थ्री डायरेक्शन रे प्रोपेगेट करछि. But I am interested on this 3 points on this per surface sigma. So ये sigma surface रे मु तीनटा पॉइंट नेली S1, S2 and S3. तो Huygen's principle अनुसार कौन कहछि this S होछि हमर कोन प्राइमरी सोर्स and this S1, S2, S3 will be our secondary source. Okay, so ये secondary source रो कोन हो पुनी अथर spherical wave गुडा फॉर्मेशन हो like this. Okay, so S2 रो भी सेम spherical wave गुडा फॉर्मेशन हो and S3 रो भी सेम spherical wave गुडा फॉर्मेशन हो. So ये देखि पारछो मु दी प्रकार कलर रिप्रेजेंटेशन करछि गोटे होछि ब्लू कलर and one is red color. So blue color is our positive optical disturbance and negative is called our is red color dot रे जो मु रिप्रेजेंट करछि. So these are called negative optical disturbance. So काइना disturbance हमरो both माने forward और reverse direction में जाई पारे. So only this positive optical disturbance they will contribute and negative optical disturbance माने किसी contribute करिवे नाही. ओके, तो एठू हम कोन करबा आउडे स्फेरिकल सर्फ माने जो पॉजिटिव ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस जोना मिलला तो से माने कोन सुपर इंपोज हे कि हमको आउडे ऑप्टिकल सरफेस मिलबो लाइक दिस. So suppose I will take that one is a new sigma, so that is capital sigma surface. Okay, so these are the basics. So diagram da roila. So point sources emits pulse of light waves. Sigma is the spherical surface, so it is the sigma surface roila. And optical disturbance reach S1, S2 and S3 in short time, which create positive and negative optical disturbance. Okay, so ये जो point S1, S2 and S3 रो जो positive and negative optical disturbance का बाहरला. Sigma is the okay, so it is capital sigma. So the sigma is the geometric envelope of all the secondary wavelets emitted at the same time from the primary wave from sigma. तो ये जो sigma surface रू हमर जो secondary wavelet गुड़ा बाहरला तो तार कोन geometrical envelope will be of all this surface or all this wave front that is emitting from this surface sigma, so that I can treat this like our capital sigma. So I can recite this Huygen's principle like this. So मैं Huygen's principle को मैं पुणे तो recite केन कर पाइबा. तो various points on an arbitrary surface. So it arbitrary surface रहला. So set different points उड़ा रहला. So these are the various points. If they are reached by a wave front, become secondary source of wavelets. So this becomes secondary source of wavelets. The geometric envelope of all these wavelets at a given instant of time depends on the new position of the wavefront. तो ये जो ब्लू कलर जो माने जो पॉजिटिव ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस रहला तो सेमानकर जियोमेट्रिक एनवेलप ऑफ दिस वेव्स, सो दे विल प्रोड्यूस एन न्यू पोजीशन ऑफ दिस वेव फ्रंट. सो ये जो एटा रहला हमर कोन वेव फ्रंट रहला प्राइमरी डिस्टर्बेंस रो तार डिफरेंट पॉइंट उडा रहला डिस्टर्बेंस S1, S2, S3. तो तार जो सेकेंडरी वेवलेट जोड़ा सब फॉर्मेशन रहला तो सेमानकर जियोमेट्रिक एनवेलप रो हमर आ गुड सेकेंडरी सरफेस हमरो. सो दिस इज कॉल्ड आवर Huygen's प्रिंसिपल. Okay, so a little bit theoretical approach because हमें जो आगुरु जो पढ़थले that is particle property of light and एबे जोटा पढ़छु हमें that is wave property of light. So they are very two different aspects. Okay, yeah. Okay, so हमें एबे discussion करिबा something about our wave motion.
वेव मोशन ऑलरेडी आमर CHSE फर्स्ट ईयर रे ऑलरेडी अच्छी वेव सिंपल वाइब्रेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन ये जिन आम ऑलरेडी पढ़ी मैंने आप सब जानते बोली एक्सपेक्ट करुँच बट सिंपल बट स्मॉल इंट्रोडक्शन तो मुझे दूसरी या so I'm taking a rope. So suppose जो black color line to देखुन that is a rope and it is tied to a rigid surface on the rigid surface and other end is free. माने ये जो surface टा रहा है जो माने ये वाला जो represent करते हैं this is a rigid end माने this is fixed at this point and ये जो other end रहा so suppose this end is our free. So this is our fixed end. We hold the other hand and create a disturbance. Okay, so ये जो hand टारू जो रहला ये position रे ये जो एटी मु कौन करी गोटे disturbance create करबी like suppose गोटे pulse type रो मु suppose दोची like this. Okay, so एमली जो दबा माने कौन हो हमारा vibration टा start हो like this. Okay, so this is a merely representation of this. तो एटे कौन हो गोटे vibration type रो start हो एमती type रो से motion करिवो और गोटे disturbance create हो ये position रे and it will move like this. And it will move further towards the fixed end. Okay, so experiment आपण भी कर पाइथिबे जस्ट गोटे रोप गोटे फिक्स एंड रे टाई करंतु एंड जोटा फ्री एंड अछि गोटे स्मॉल जर्क टे दियंतु और स्मॉल गोटे इंपल्स और स्मॉल पल्स टे दियंतु देन द वाइब्रेशन विल ट्रांसमिट across the rope towards the fixed end. Okay, so it's a very simple experiment. It will travel to the other end and what will happen if I keep moving my hand up and down continuously माने ये जो हैंड टा रहला मो एठू माने हैंड टा पूरा कंटीन्यूअसली एवडा टाइप रो करली तो सेठी मते कोन गोटे वेव टाइप ऑफ एवडा पैटर्न ना मते मिलियो. ओके, सो एक्सपेरिमेंट सिंपल आपण चाहे घरे भी कर परिबे राइट. तो सेकंड केस रे मु कोन करली फर्स्ट केस रे मु करथिली कोन गोटे खाली सिंगल पल्स टा देथिली बट एबे मु कोन करबी कंटीन्यूअसली मोर हैंड अप एंड डाउन टाइप रो करबी देन ऑब्वियसली विल गेट ए वेव टाइप ऑफ थिंग जस्ट लाइक दिस राइट. या so we'll get a sine wave. So this one is called a sine wave representation and ताको हमें केमते represent करबा. So already मु एडा previous classes रे कहि देइछली. So suppose 0 is our initial position and our wave will go something like this and highest amplitude point तक को जिवो crest and lowest amplitude point को हमें कहबा trough and suppose this is a phase pi, this is phase 2 pi and in between point आसो pi by 2 3 pi by 2 then it आसो 3 pi. Similarly process टा हमर चलियो and the distance between two consecutive crest or two consecutive trough हम कोन कहतले wavelength बोले हम कहतले right. and this completes one oscillation माने point हमर एटू start हला one crest and माने गोटे highest maximum point and गोटे lowest amplitude point and ए position terminate हला. so this is called as one oscillation right. and ए जो distance को हम नोच माने जो vertical displacement जोड़ा होची from mean position so that is called as our amplitude of this sine wave right. and equation of motion in this case is our y naught equal to is a function of time so that is called a sin omega t. okay, so ये माने कोन ए जो हम amplitude टा नेले y naught माने हमर केते displacement होची after a particular time and omega is our frequency right. and where omega is angular frequency so it's not frequency, it's angular frequency. A is the amplitude of the wave, so A is our amplitude of the wave and omega is our angular frequency and time period t will be given by t equal to 2 pi by omega. Okay, so these are all intermediate first year things, so I'm not going to detail of these things more detail को जाऊ नै काहे ना जिन छोड़ा पाउना ऑलरेडी पढ़ी छन बोल मु आशा करू. and frequency of oscillation को हम कहि पारे nu equal to 1 by t that is omega by 2 pi. okay, so time period माने t equal to 2 pi by omega and frequency is inverse of this time period that is omega by 2 pi. okay, so please remember these things because एगुडा हम यूज करियो previous माने upcoming classes गुडारे. if the wave is moving with a speed v displacement of the particle at x at time t will was originated at x equal to 0 and the time t equal to t minus x by v. okay, माने कोन रीजन टा कोन एक्चुअली हमर एक्सप्रेशन टा थिला y इक्वल टू a sin omega t किंतु सपोज हम डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कले सो आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम t तो सपोज वेलोसिटी हमर v आसिला एंड डिस्प्लेसमेंट आसिला केते x तो ये जो एक्सप्रेशन रो टाइम पैरामीटर जोटा t थिला सो दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t minus x by v. okay, so x by v माने कोन x होची हमर डिस्प्लेसमेंट एट v इज आवर वेलोसिटी
ताको हम जो डिवाइड करबा सो दैट विल बी अनदर टाइम. So that much time has been subtracted from this main time t. Okay, so it is the basic equation of the sine wave. And let's define another term that is called wave number k, where k equal to 2 pi by lambda. Okay, so lambda होची कोन हमरो wavelength of that particular wave, and ताको जदि हम 2 pi by lambda यूज करबा then we will give our wave number. Okay, so एटी हम तीनटा different parameter विषय पढछे. गोटा छला wavelength, then time period, frequency, wave number. So both would interrelated things, all are interrelated to each other. Okay, so it equation recall करें हमें velocity equal to frequency into wavelength. जानते हैं समझते. So now let's substitute all these things here, and by looking these things here we can write like k equal to 2 pi by lambda, but lambda equal to कौन आसीबा हमरो v by nu लिखि पारियो हमें, because velocity equal to frequency to wavelength, then wavelength will be equal to v by frequency v by nu, then 1 by lambda আছে, so that will be 2 pi nu by v आसीबो, right. And आमे जान के इक्वल टू कोन ओमेगा बाय न्यू लिखि परबे आमे, काहे ना 2 पाई न्यू माने कोन 2 पाई न्यू इज आवर ओमेगा, जोटा कि आमे जस्ट प्रीवियस स्लाइड रे पढले 2 पाई न्यू इक्वल टू ओमेगा. हियर न्यू इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इनटू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रे एक्सप्रेशन. तो आमे ओमेगा जगह रे 2 पाई न्यू आमे सब्स्टिट्यूशन कर पाइला. या ओमेगा, so 2 pi nu जगह में omega substitution कर दिली, so that is omega by v. So please don't confuse between this v and nu, although both are looking like same, so दीटा को same type रो देखा जाउछंदी, but v is our velocity and nu is our frequency of this wave. Yeah, then a sin, तो अभी मु कोन कली, ये जो ओमेगा टा जो बाहर आसिला, that is omega is our angular frequency, ताको भितरे मु मल्टीप्लाई कर देली, तो कोन आसीबो omega t minus omega x by v आसीबो. So a sin omega t minus omega by v into x में लिख पारि, तो सिंपली ओमेगा टा को भितर मल्टीप्लाई कर दूँ. नेक्स्ट कौन का लिख पारि, आको टिक सिंप्लीफाई कर हम लिख पारिबा a sin omega t minus kx लिख पारिबा, काहे ना omega by v माने केते k, so this is also one form of this sine wave representation. Okay, so हमें दी टाइप रो पढले, गोटे होची y equal to a sin omega t minus x by v, and second हम पढले y equal to a sin omega t minus kx. एंड आपको आम ये बड़ा टाइप रे भी आम लिखि पारिबा केमती a sin ओमेगा को आम लिखि पारिबा 2 पाई बाय t इनटू t माइनस k जगह रे मु सब्स्टिट्यूशन कर पारिबी केते 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x. ओके, बस वेरी सिंपल, जस्ट यही इक्वेशन ने मु खाली कोन करली ओमेगा एंड k रो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करछि, बिकॉज़ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t, राइट, एंड k इक्वल टू केते 2 पाई बाय लैम्डा. सो जदि हम एठी कोन करबा ए इक्वेशन रहला देखंतु, सो न्यू इक्वल टू 1 बाय t, दैट इज ओमेगा बाय 2 पाई. सो ताको जदि हम करियो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t लिख पारिबा, जस्ट ए दिटा इक्वेशन को ये करंतु, जस्ट खाली 2 पाई टा को ए साइड ने गेले ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t आसला, तो 2 पाई बाय t पके देली, एंड k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. तो आको जदि मु 2 पाई टा बाहर कॉमन ने गेली, तो केता आसी हमरो a sin 2 पाई t by t minus x by lambda. So this is also one another form of sine wave representation. ओके, फिर तीनटा रहला, गोटा होची y इक्वल टू a sin ओमेगा t minus x by v, सेकंड रहला y इक्वल टू a sin ओमेगा t minus kx, एंड y इक्वल टू a sin 2 pi t by t minus x by lambda. सो हमें डिफरेंट फॉर्म गुडा में यूज कर परिबा फॉर आवर फॉर माने नेक्स्ट क्लासेस गुडा में एक्सप्रेशन गुडा में यूज करबा. ओके, या नेक्स्ट हमें पढ़बा अबाउट इंटरफेरेंस. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. So that is the modification in the disturbance of light energy obtained by the superposition of two or more waves is called interference. माने कौन modification of distribution of light energy obtained by the superposition of two or more waves, माने दुईटा और more waves हमें नवा. तो ताकू जदि हमें कौन करबा, जदि हमें इंटरफेरेंस माने जदि इंटरफेयर करबे और सुपरपोजिशन जदि करबे, तो सेमानकर कोन हो एनर्जी और एम्प्लीट्यूड रो डिस्ट्रीब्यूशन टा चेंज आसीबो, तो ताकू ही कहै कोन इंटरफेरेंस. गोटे सिंपल एग्जांपल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस माने एक्चुअली डिफरेंट कंडीशन गुडा अछि, तो से कंडीशन सैटिस्फाई हेले ही हमर इंटरफेरेंस पैटर्न हे परियो. सो कंडीशन गुडा कोन, द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, द टू सोर्सेस मस्ट emit continuous wave of same wavelength and frequency, the two sources must be monochromatic, the amplitude of the interfering wave should be equal or nearly equal, and the sources must be narrow and should be close to each other. So माने कोन, the two sources must be coherent. Actually coherent sources रो concept मु
जस्ट नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करी विथ डिटेल कोहेरेंसी माने कौन कोहेरेंट सोर्सेस माने कौन देन नेक्स्ट वन इज द टू सोर्सेस मस्ट इमिट कंटिन्यूअस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी माने जो दीटा वेव जो सुपर इम्पोज होउछंदी सेमानकर वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी सेम होबा पड़ियो नेक्स्ट द टू वेव्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक माने सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट रहबा पड़ियो ओके माने हमर जो व्हाइट लाइट रहला दैट कंपोज ऑफ 7 कलर्स जोटा कि हम ऑलरेडी चैप्टर 5 रे पढ़थिले VI GY OR बट मोनोक्रोमैटिक माने गोटे सपोज सिंगल रेड कलर नेली और सिंगल येलो कलर नेली सो दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट देन द सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल ओके सो जो दीटा एम्पलीट्यूड रहला माने जो मीन पोजीशन नु सेमानकर मैक्सिमम वाइब्रेशन जे आउछ ताको जे एम्पलीट्यूड एंड दैट एम्पलीट्यूड मे बी इक्वल और नियरली इक्वल माने बहुत जदि डिफरेंस हेले भी हमर सुपरपोजिशन नै परियो नै एंड द सोर्सेस मस्ट बी नैरो एंड शुड बी क्लोज टू ईच अदर ओके सो दीज आर द सम फ्यू कंडीशंस एंड कोहेरेंस कोन हमें नेक्स्ट क्लासेस रे हमें डिटेल डिस्कशन करियो ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज ओके तो सपोज एटी रहला सोर्स टा एंड हमर स्क्रीन टा में बहुत दूर रखले ही हमर इंटरफेस पैटर्न टा में क्लियरली ऑब्जर्व कर पारिबा ओके या सो हमर दी प्रकार इंटरफेरेंस हमर हे पारे गोटे होची कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सपोज एटा होची हमर वेव नंबर 1 एंड एटा होची हमर वेव नंबर 2 एंड दे आर सुपर इम्पोजिंग विथ ईच अदर सो दीटा वेव जो रहला से माने कोन करछन सुपर इम्पोज होछन तो एबे हेले कोन हो एबे फर्स्ट हम देखबे दीटा वेव कोन इन फेज विथ ईच अदर माने तार मीनिंग कोन एबे एही पोजीशन ए जो फर्स्ट वेव रो कोन असला क्रेस्ट असला तो से पोजीशन आर भी क्रेस्ट आउची आर भी ट्रफ जगह ट्रफ आउची मींस वी कैन से दैट ए दी जन कर फेज माने दी जन इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन सो मान जदि हम इंटरफेयर करबे देन वी विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वी विल गेट ए वेव that which with increased amplitude माने देखि परथबे ए जो एम्पलीट्यूड असला माने एटू माने गोटे लाइट टे इमेजिन करसु दैट इज आवर मेन पोजीशन तो एटी एम्पलीट्यूड कोन थिला कम थिला बट से जदी आउट वेव से तो हमर मिसी जीवो एंड दे आर इन फेज विथ ईच अदर देन हमर जो रिजल्टेंट वेव टा हमर मिलियो दैट विल बी ऑफ हायर इंटेंसिटी ओके सो तार इंटेंसिटी कोन हे जीवो बढ़ी जीवो सो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओके कांगना एम्पलीट्यूड टा हमर कोन हे जाई बढ़ी जाई so next case हम डिस्कशन करिया that is waves are in the same phase of disturbance so dita wave same phase रे अछंदी so next case हम डिस्कशन करिया that is about destructive interference so destructive माने कोन सपोज एटा हला हमर वेव नंबर 1 एंड एटा हला हमर वेव नंबर 2 which are out of phase with each other माने कोन एही पोजीशन रे माने गोटे पर्टिकुलर पोजीशन रे आर क्रेस्ट आसला बेल को आर कोन ट्रफ आउच आर ट्रफ आसला आर क्रेस्ट आउच this means these two waves are out of phase with each other then themanकर जो जदी interference हला then the resultant intensity will be reduced so that is called as destructive interference so that is reduced amplitude and waves are out of phase with each other बुझा पड़ला माने जो दीटा वेव रो जदी क्रेस्ट पोजीशन एंड ट्रफ पोजीशन मैच होची so that is called as constructive interference and से माने जदी सुपर इम्पोज करचंदी जदी interference रो all the conditions से मान को माने लागू होची satisfy करचन then we will get a wave with higher amplitude just like we observed in the previous case right yeah like this we will get a wave resultant wave with higher amplitude but the data wave out of phase with each other so then we will get a wave with reduced amplitude so that is called the destructive interference okay so let's try to understand this one with this waterfall analogy so this is जो वीडियो टा मु आपन माने जो देखौची so that is already in YouTube so this copyright belongs to that uploader only and a link टा जो दोचे so ए लिंक रे आपन डिटेल वीडियो टा आपन देख परिबे or you can simply search this original double slit experiment and our link टा भी मु कमेंट सेक्शन में मु दे दोची okay so let's देखिबा माने एक्चुअल सेट वीडियो टा मु कोन कहूची से Light were behaving as particles, you would expect them to go through each slit and just produce a bright spot underneath, so we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern.
This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's ओके सो ये कहबार रिजन कौन से जो एक्सपेरिमेंट इज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट तो से कौन कही ये जो दीटा सोर्सेस जो नियाला सो दीज आर द टू सपोज टू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस देन से कौन कला दीटा गोटे वाइब्रेशन क्रिएट करने को चेष्टा कला एंड फॉर वन वेव माने गोटे वाइब्रेशन जो क्रिएट कला बट आम सेकेंड जो डिस्टर्बेंस आउची सो हमको ये जो पैटर्न आसला ये मोर इंटरफेरेंस पैटर्न आम देखा मिलूँ राइट माने इंटरफेरेंस पैटर्न केतबेले आछी माने जो दीटा वेव रो माने क्रेस्ट एंड ट्रफ जो मैच होची देन विल गेट आवर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड जो ओके सो ये पोजिशन गुड़ा आसला माने जो क्रेस्ट एंड क्रेस्ट ट्रफ मैच होची सो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आम को लाइट मिलो एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आसो देन विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ लाइट ओके सो यहाँ ही आम ये वीडियो सी एक्सप्लेन कर सो इट इज वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट यहाँ आप चाहिए घरे भी करेंगे वेरी फनी एक्सपेरिमेंट ओके सो लिंकटा मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देती एंड दिस वीडियो ऑथरशिप गो टू दिस करस्पॉन्डिंग अपलोडर ओके सो ये जो आम जो डिस्कसन करते दैट इज आवर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज यंग्स एक्सपेरिमेंट सो ये जो आम डिफरेंट जो अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट जो पैटर्न मिलता दैट वी कैन अंडरस्टैंड विथ द वाटर वेव एनालॉजी ओनली माने कौन ये जो आमर जो रेड कलर एंड रेड ब्लैक पेज टाइप माने जो गोटे पैटर्न फ्रिंज टाइप पैटर्न जोड़ा मिलता सो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी कंसीडर दिस लाइट एज वेव्स माने लाइट को हम जो वेव कंसीडर करवा देन ओनली हम कहि पारे जो दीटा लाइट रो क्रेस्ट एंड ट्रफ जो मैच कर देन वी आर गेटिंग दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड आमर ये जो रेड कलर स्पॉट मिलूँ एंड जो पोजिशन आम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होची माने जो क्रेस्ट सहित ट्रफ मैच हो जाऊँगी देन आमर इंटेंसिटी कौन जा कमी जाऊँगी देन वी आर गेटिंग दिस ब्लैक स्पॉट और डार्क स्पॉट सो दिस इज आवर वेव नेचर ऑफ लाइट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर फॉर नाउ सो ये आज आम लेक्चर आम डिस्कसन कले मेनली कौन हाइजेंस थ्योरी कौन एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव विषय पढ़ले एंड इंटरफेरेंस एक्चुअली कौन तार दीटा टाइप मुझे कहली गोटे हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ताको मैं बुझले विथ ए वेरी सिंपल एग्जांपल दैट इज आवर वाटर वेव एनालॉजी ओके सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बिकॉज वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आप किसी डाउट अच्छी किसी सजेशन अच्छी सो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इन आवर कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज CHSE Science Classes. And thank you for watching this video. Thank you so much.